नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज 18 जनवरी 2023 बुधवार है। इस समय शाम के 7:40 हुए हैं और अभी अमरीकी बाज़ार खुले नहीं है जब हम आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं निफ्टी के लिए। आज मैं आपको चार्ट दूसरे सॉफ्टवेयर का दिखा रहा हूँ। ये मल्टी चार्ट्स है और ये सौजन्य मल्टी चार्ट्स के सौजन्य से ये चार्ट दिखाए जा रहे हैं। मैं मल्टी चार्ट्स को काफ़ी उपयोग में लेता हूँ, खास कर विशेषकर या मान लीजिए सिर्फ इसकी एल्गो ट्रेडिंग की फैसिलिटीज़ के लिए। इतनी बढ़िया एल्गो ट्रेडिंग के इसमें टूल्स हैं जो मुझे और कहीं सरलता से नहीं मिलते हैं। तो मल्टी चार्ट्स एल्गो ट्रेडिंग के लिए काम में लेता हूं मैं। उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन में कई बार ट्रेंड एनालाइजर में कर लेता हूं, जो मैं आपको प्राय रोज ही दिखाता हूं। यानी एल्गोस का डेवलपमेंट यहाँ करता हूँ और उसको इम्प्लीमेंट डे टू डे वहाँ करता हूँ, क्योंकि ट्रेंड एनालाइजर रोज़मर्रा के काम में उपयोग करने के लिए बहुत ही सरल है। अब आज मल्टी चार्ट्स इसलिए काम में लिया है क्योंकि मैं इसमें आपको एक इंडिकेटर दिखाना चाहता था। इसको देख लीजिए। ये इंडिकेटर जब जीरो के आसपास आ जाता है, बिल्कुल जीरो को चिप के पास चिपक जाता है, तो ये बताता है कि हम एक बड़ी मूव के लिए तैयार हो गए हैं। ये यहाँ जीरो पर आया, ये जीरो था और बड़ी मूव आई। यहाँ ये जीरो पर 2-3 दिन तक रहा, ये 2-3 दिन के बाद बड़ी मूव नीचे की तरफ आई। यहाँ ये जीरो पर तो नहीं गया, पर जीरो के आसपास जरूर गया, लेकिन कोई मूव नहीं आई। मैं ये बात इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कोई भी इंडिकेटर गारंटी नहीं देता है। ये बताता है कि ऐसा हो सकता है, हर बार ऐसा होगा वो तो कहना ही असंभव है। तो ये उदाहरण इसलिए दिखाया जा रहा है आपको कि हर बार ऐसा होना आवश्यक नहीं है। ये बात खास करके थी जो आपको मैं दिखाना चाहता था। ये आज फिर जीरो के आसपास बिल्कुल चिपक गया है जीरो से। अब ये हमको दर्शा रहा है कि भाई एक बड़ी मूव आनी चाहिए। कुछ भी हो सकता है, ना आए, नीचे की तरफ आए या ऊपर की तरफ आए, ये तो बाजार ही बताएगा। अभी जो ट्रेंड है वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऊपर की तरफ है, इसलिए हम ये मान रहे हैं कि ट्रेंड अप है, तब तक हम लॉन्ग रहेंगे। इंट्राडे में ट्रेंड बदल भी सकता है, कोई कहना नहीं है। जब तक इसका 18,030 का लो है, ये लो नहीं टूटता है, तब तक तो हम अप ट्रेंड में ही हैं। टूट गया लो, क्लोज इसके नीचे हो गया, तब देखा जाएगा क्या होता है। इंट्राडे के टूल्स या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के टूल्स हमारे पास रहते हैं। अगर वो बताता है कि आप अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाइए तो हम निकल जाएंगे। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि एक बड़े मूव की अपेक्षा है। इंट्राडे ट्रेड ऊपर की तरफ है और अब ये लाइनों को देख लीजिए। ये 18,130 का रेजिस्टेंस था जो कि आज सरलता से टूट गया। उसके बाद ये 18,250 का बड़ा रेजिस्टेंस है जो कि अभी दूर है। अगर बाजार ये तय कर लेता है कि उसको ऊपर जाना है तो फिर उसको यहाँ रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए। अगर वो तय करता है कि नहीं, नीचे ही रहना है, तो हम फिर वापस इस रेंज में प्रवेश कर जाएंगे। फिर जो होगा सो होगा। इतनी सारी कहानियों का अर्थ क्या है? कहानी का अर्थ सिर्फ इतना है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऊपर की तरफ है। अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये ट्रेंड बरकरार है। इंट्राडे में अगर चेंज होगा तो आपके पास ऐसे टूल्स होने चाहिए जो आपको वार्न कर दें कि ट्रेंड में बदलाव आ रहा है। तब तक हम लॉन्ग पोजीशंस ही रख रहे हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स देते रहिएगा। जय हिंद। गुड इवनिंग। आई एम सुदर्शन सुखानी एंड दिस इज January 18, 2023, Wednesday. It's about 7:35 p.m. in the evening and I'm recording this video for Nifty View before the US markets have opened. The chart is slightly different from the ones we use every day simply because I wanted to show a particular indicator. That's why. This chart is from multi-charts. I use multi-charts extensively for my system analysis, for my systematic trading. Multi-charts offers excellent tools for developing trading systems, the algorithms essentially. And for most of my discretionary trading and a lot of my implementation of these algos, I use trend analyzer, which is what I show to you every day. I wanted to show you a particular indicator which I had in multi-charts. I have not yet moved, so it's still here. This indicator is doesn't matter what it's called. Look at how it narrows down. This is the area in which the indicator narrowed down. It became close to zero. This is the point at which it became close to zero. And when it is at or near zero, it tells us that a big move is coming. In this case, the big move came on the downside. Before that, on the left hand side, see, the indicator simply hugged zero. And what it did was, a big move is coming. The big move came on the upside.
Again here, the indicator did not become zero, but it narrowed down significantly as compared to this. And it told us that a big move is coming. The big move did not come, although the market became sideways, but essentially that big move that we were expecting did not come. I'm showing this because this indicator, like every other indicator, is not a guarantee. That you understand. What's interesting is today's price action. Look at this indicator, it's now hugging zero, telling us that a big move is coming. Now, three things can happen. A big move need not come, a big move comes on the downside, a big move comes on the upside. And I don't have any way of telling you where it will come. Currently the trend is up and we are long, that's all. If the trend changes abruptly, then tomorrow we will have to go and close our positions and probably take a loss. From mark to market positions we will have a loss. Actually went long early, so to that extent it's okay. My point really is to show you what this indicator is telling us, and which is why I used multi-charts today. The other point is, since we are here, we can as well as identify I'm sorry, what multi-charts is doing and what Nifty is doing. Our friend, the trading range is very much intact. This is 18,250, but this is the 18,130 level, which has been broken decisively, at least for today. Now, if the trend continues, whether it's up or down tomorrow is irrelevant. If the trend continues and holds, then we should try to test 18,250, this area, and then see what happens. So far the trend is up. Now we may have a white candle tomorrow, we may have a red candle tomorrow. I have no way of saying that. But the important point is, if these lows hold, and what is the low? Low is 18,032. If the low holds, the chances are that we are looking at a continuation of the uptrend. So the summary is that a big move is expected. The minor trend is up and we are long, and of course we monitor it on a day-to-day intraday basis. If the trend changes, we will have to cover our positions. You have to decide what you want to do. I'm just giving you what I do and how I analyze the charts. Thank you for watching this video. Please give your comments as much as possible. Jai Hind.